Okay, we were doing the topic vectors, and in that vector till now, these are the important points we have done. I mean, the first, how to write a given vector in the form of a column vector xy. Then, if you change the direction of a vector, then sign will change. AB is equal to minus BA. How to calculate the magnitude of a vector? Magnitude of a vector means length of a vector. It's simply square root of x square plus y square. What is a position vector? Position vector is a vector which starts from origin. A vector which starts from origin is called position vector. Like OA is a position vector of A, OM is a position vector of M, OP is a position vector of P. Next important point, if you have the coordinates of A 3 minus 2, it means you can write the position vector of A as well, which is also 3 minus 2. So the coordinates of a point and the position vector has the same elements, only the writing style is different. Mean the A, when you're writing the coordinates of it, you will write in the form of coordinates. But when you are writing vector, position vector is a vector, so that will be written in the form of column vector, 3 minus 3. You can write any vector AB in terms of its position vector. Like AB in terms of position vector will be OB minus OA, PQ will be OQ minus OP, SR will be OR minus OS. So position vector of second minus position vector of first. Then the last thing we did yesterday was we can write any vector in the form of sum of other vectors, like AD is equal to AB plus BC plus CD. The important thing here was because you are looking for AD, so you have to start from A and end at D. And in between, the path should also be connected. What does it mean? They should be connected. Mean if this vector is ending at B, so it means the next one should be starting from B. This is showing that they are connected. If one vector is ending at C, so next vector should be starting from C. That's why this is showing that they are connected. And we did one example as well. This one, in which there was a quadrilateral. Quadrilateral ABCD was there, AB was given, BC was given, DC was given, and we have to find AD, the vector AD. So we made a path to find AD. And what path did we follow? We AB plus BC plus CD. That is the path we followed. Okay, now the next question today, I will give you some question in which there will be no diagram. Like ये जो question था इसमें तो diagram थी आपके पास. So it was quite easy to make a path. Akbar Shariar, please focus here. Now the question is, if we have a vector AB, please write the question 3 minus 1. There is a vector BC minus 2, 4. Vector DC is given 3, 2. So these are the vectors which are given. Now there is no diagram, so you need to make the path yourself. You have to find number 1, the vector AD. So one thing is sure, we have to start from A and we will end at D. So A से
D तक हमने जाना है. So what should be the path? Definitely अगर आप देखें A से, if you want to take a start from A, तो A से maximum you can go to B because vector AB is given. So the possible path AB for A to D is first initial, we are starting from A and we can move from A to B. Now because we are at B now, so the next vector will start from B. So B से हम कहाँ जा सकते हैं? B से अगर आप जो given information है उसको भी देखना है आपने. B से हम सिर्फ C तक जा सकते हैं. So AB plus BC. Now we are at C. So C से we can go towards D. Because DC is given, तो हम उसकी direction reverse कर लेंगे. So now we are at D. So A to D, C, that was A, और A से हमने कहाँ तक जाना था? D. So that is the path for vector AD, AB plus BC plus CD. Now use the matrices, column vectors. AB is 3 minus 1. What is BC? It's minus 2, 4. What is CD? Your DC is 3, 2. So just change the direction. Your CD will be minus 3, minus 2. So you'll get the vector AD. So we got vector AD as 3 minus 2 minus 3. It's minus 2, 1. Simple addition. So the vector AD is minus 2, 1. Okay, now you have to find. Yes, Hamza Anwar, what will be the vector DA? Hamza Anwar. Sir, will it be OA minus OD? Do we have OA and OD? No, sir. So we can't use, yeah, you are right. DA we can is equal to OA minus OD, position vector of A minus position vector of D. But the problem is we don't know the position vector, so we can't use that. So already, yes, you are right, Yahya and Mohammad Bakshi. I think he wants to tell the answer. Yes, Bakshi. Sir, हम simple sign switch कर लेंगे इधर 2 minus 1. G Hamza Hamza Anwar, C already AD is minus 2, 1. So just if you are looking for DA, direction change करनी है, तो sign change करने, make it positive to negative 1. That will be your vector DA. Okay, third is now you have to find CA. G. What should be the path to find CA? Yahya Imtiaz. Tell me the path to find CA. Sir, Right, Shamir. Yes, Yahya. sir, A to B plus B to C. CA से जाना है तो पहली बात कि हमें C से start लेना है. अच्छा, C से B और फिर B से A. C to B you are saying and then B to A. You are right. But that is not the only path. But this is the correct one क्योंकि CB भी आपके पास given है, BA भी given है. हमें बता रहे हैं बख्शी CD plus DA. He is also fine क्योंकि CD भी given है और DA भी हमने part 2 में calculate किया हुआ है. So that is both are correct. So if we use CB, CA is CB plus BA. CB, we have BC minus 2, 4. So CB will be positive 2, negative 4. And what is BA? We have AB 3 minus 1. So BA will be minus 3 plus 1. So the vector CA will become minus 1, minus 3. Right?
Yes, Dawood. Sir, I have a question. On the first day, you taught us when we will put a minus sign in front and when we won't. मुझे याद नहीं आ रहा माइनस कब डालते हैं. Like जैसे -1 -3 लिखा है. ये -1 -3 मैंने लिखा है, ये तो मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिखा है ना, 2 -3 -1 आया था, -4 + 1 आंसर -3 आया था, तो मैंने माइनस लिख दिया, वो तो आया ही माइनस था। सिर्फ माइनस साइन मैंने उस वक्त कहा था चेंज करने जब आप वेक्टर को रिवर्स करें, जब वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर रहे हैं। मीन यहाँ पे आपको वेक्टर बी ए चाहिए था, बट यहाँ पे गिवन जो था वो ए बी था। सो ए बी क्योंकि 3 -1 है, बट वी वर लुकिंग फॉर बी ए, सो वो उसका साइन चेंज कर दे, -3 + 1 कर दे। Okay, next example. If the position vector of A is given, OA is given -5 2, AB is given 3 -4, CB is given 8 0. This is the information we have, and the question is to find number 1, position vector of B. We have to find position vector of B. The first thing, position vector mean कौन सा vector find करना है? Muaz Khan. What do we have to find here? Which vector? O or B. Yes, position vector of B mean we have to find the vector OB. What is the position vector? Which starts from origin. So position vector of B mean we have to find OB. G, and further, how to find OB now? What path should be followed to find OB? Path से भी हो सकता है और ये वो उस फॉर्मूले से भी हो सकता है, बहरहाल आप बताएं, who wants to tell? Yes, Abdullah Shahid. How to find vector OB? Sir, AB is equal to OB minus OA. So उससे जी, question Abdullah Shahid is saying कि AB is equal to OB minus OA. ये कहाँ से आया? ये अगर आप जो facts मैंने लिखवाए हुए हैं, summary एक लिखी है, उसमें आप लिखा हुआ है, you can write any vector in terms of its position vector. So AB is equal to OB minus OA. ये आप ये समझ लें कि वहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, PQ is equal to OQ minus OP. So any vector can be written in terms of its position vector. AB is equal to OB minus OA. Yes, Abdullah, that is right. चले पहले मैं इसी मेथड से करता हूँ. So AB, we know vector AB here. It's 3 - 4. So vector AB is 3 - 4. OB we are looking for. OA is -5 2 given in the question. If you want to find OB, shift -5 2 on the other side. So यहाँ subtract हो रहा है ये matrix, so उधर add हो जाएगा. So 3 - 4 plus -5 2. So OB is 3 - 5 is -2, and -4 + 2 is -2. So the position vector of B is -2 -2. और अगर आप यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो ये फैक्ट आपको पता था, फॉर्मूला आप कह सकते हैं, अगर पाथ बनाए हम यहाँ पे तो पाथ भी बना सकते हैं. यस मुस्तफा जैदी, कैन यू टेल मी द पाथ फॉर OB? ऊपर जो गिवन इंफॉर्मेशन से O से स्टार्ट लें और B पे एंड करें, तो क्या पाथ यूज कर सकते हैं टू फाइंड OB? फिर वापस रिपीट करेंगे. आई एम आस्किंग, इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड OB? एक तो ये है ना फॉर्मूला, AB is equal to OB minus OA.
इज देयर एनी अदर वे, मीन कोई ऐसा पाथ भी यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन में बना सकते हैं जिससे ओ बी हम फाइंड कर सकें? यस रयान मीर, यू आर राइट, ओ ए प्लस ओ बी। देखिए हमने ओ बी फाइंड करना है तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम ओ, तो ओ से हम ए जा सकते हैं, यस, एंड फर्दर ए टू बी, so we will reach finally at B. So OA plus AB, basically ये भी वही बात बनती है। So OA is given in the statement of the question -5 2. AB is also given 3 minus 4. So -5 plus 3 is -2 and 2 minus 4 is also -2. So OB आपने पाथ बना लिया कि O से स्टार्ट लिया और B पे एंड किया। So both methods can be used, both are correct. और एक्चुअली ये एक ही है, बात वही बन जाती है। सेकेंड इज यू नीड टू फाइंड नाउ द वेक्टर ए सी। If you want to find vector AC, what path should be followed? It is A to B. Bakshi, we don't have D here. So if you are looking for AC, so A to B and further B to C. So you are starting from A and ending at C. So that is AC. And both the vectors are connected. So AB plus BC. And what is AB? It's 3 minus 4. And what is BC? Because CB is given 8 0, then BC will be minus 8 0. So 3 minus 8 is -5, minus 4 plus 0 is -4. This is the required vector AC. Gee, I hope it's clear. Any question? Okay, next is हम addition of vectors कर चुके हैं. Next is parallel vectors. Okay, how will you identify whether the two given vectors are parallel or not? आप देखें, अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करूं, which is ग्रिड के बगैर कर लेता हूं कि suppose there is a vector AB which is 2 unit right and say 3 unit up, 1 2 3. I have drawn a vector here AB, which is, I'm going to write here AB is 2 unit right, 3 unit up. That is the vector AB. Say I'm going to draw another vector here, which is starting from C. Say this is C. It is 4 unit right, 1 unit right, 2 unit right, 3 unit right, 4 unit right. This is 4 unit right. And then further I'm writing 6 units up, 1 2 3 4 5 6. So this is another vector CD. You can draw this accurately on your graph paper just to observe. अभी नहीं करना आपने. आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब ये वेक्टर 2 में ड्रॉ करूंगा ए बी एंड सी डी बोथ विल बी पैरेलल. आप जब यहाँ पे तो क्यों एक्यूरेट ग्रिड नहीं बना हुआ, जब एक्यूरेट ग्रिड में ड्रॉ करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे इस बात को कि ये जो दोनों वेक्टर्स ए बी और सी डी हैं दे आर पैरेलल.
अब ये तो पता चल गया पैरेलल है। अब जरा आप सब कॉलम वेक्टर को ऑब्जर्व करें, जस्ट ऑब्जर्व द कॉलम वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी डी एंड टेल मी व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट देयर कॉलम वेक्टर्स। जी सॉरी, yes, one of the vector is 2 times another vector. You can say कि CD is 2 times of AB. CD is 2 times of AB. और फर्दर हम ये कह सकते हैं कि जो x कंपोनेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो x कंपोनेंट आ जाएगा, और सेम y कंपोनेंट को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास y कंपोनेंट आ जाएगा। इसका मतलब इनमें रेशियोज इक्वल हैं। मतलब रेशियोज इक्वल का मतलब कि जो x कंपोनेंट की रेशियोज हैं, मीन अगर मैं 4 to 2 रेशियो लूं एंड देन 6 to 3 रेशियो लूं तो दोनों की रेशियोज क्या आ रही हैं, वो इक्वल आ रही हैं। ये मैंने रेशियो CD to AB लिया। सो इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल सो इट मींस देयर रेशियोज आर इक्वल, दे आर प्रोपोर्शनल, they are proportional. The ratio of the x component and the ratio of y component will be equal. Or further we can write, see here, इसको यूं भी लिख सकते हैं हम, CD is equal to 2 times of AB. Can we write it like that? जो वेक्टर CD है, it is 2 times the vector AB. या यूं भी लिख सकते हैं AB vector is half of CD. ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी वेक्टर्स प्रोपोर्शनल होंगे, मीन उनके x कंपोनेंट की रेशियो और y कंपोनेंट की रेशियो इक्वल होगी, तो इसका मतलब वेक्टर्स विल बी पैरेलल। और जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनको एक इक्वेशन की फॉर्म में हम लिख सकेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी हैं, CD is equal to 2 times AB, और वी कैन राइट AB is equal to half of CD. सो इसकी मैं समरी अब लिखता हूं। अब ये जरूरी नहीं हमेशा 2 टाइम्स हो, कभी 3 टाइम्स भी होगा, कभी हाफ भी होगा, कभी -1/2 भी हो सकता है। ओके, सी इफ vectors AB and CD are parallel, then one vector, mean AB, will be k times another vector here where k is constant. ऐसा होगा ना, जिसका पिछले क्वेश्चन में k क्या आ रहा था, एक टर्म्स में एक तरह लिखे तो 2 आ रहा था, एक दफा 1/2 भी आ रहा था। सो इट डिपेंड्स कि कैसे आप लिखने का स्टाइल क्या है, क्या आप AB इज इक्वल 2 टाइम्स लिख रहे हैं CD, या CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। सो k इज अ कांस्टेंट, k कैन बी 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 2/3, 1/3, 4/3, 2/3, किसी भी तरीके से हो सकता है। सो जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे उनमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, AB is equal to k times CD। या अगर कहीं पे लिखा हो कि AB is equal to k times CD, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा the vectors AB and CD are parallel। Means reverse is also true. If it is written that AB is equal to k times CD, it means the vectors AB and CD are parallel। और अगर given हो AB and CD are parallel, so you can write them in the form of an equation। और further अब आप और अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखना चाहें, if AB is equal to the vector say xy and CD is equal to AB, and if
they are parallel. अगर वो parallel हुए तो उनमें x component की ratios और y component की ratios equal होंगी. So x ratio A will be equal to y ratio B. So ratios of their x component and the ratio of y components will be equal. So overall you can say both are proportional. Okay, मैं यहाँ पे आप वेक्टर लिखूंगा, आपने मुझे ये बताना है कि पैरेलल हैं या नहीं. See, I am writing a vector 2 minus 3 लिखते जाएं और उनके सामने लिखते जाएं कि yes or no, parallel or not parallel. So G, what are the answers for first? Yes. The first one is yes, you are right, because 2 times 4 is 8 and minus 3 times 4 is minus 12. They have a constant ratio. So yes, the first one is yes. Second, no, 3 times 2 is 6. So 4 times 2 should be 8, but it's not 4 times 2, it's 4 times 3. So no, the answer for second is no, they are not parallel. Third one,
Third is, yes, 8 divided by 4 is 2, 4 divided by 4 is 1. Yes. And the last one, it is parallel. Last is also parallel. And what's the constant here? K. If you want to look for the constant, then what is that? 1.5, 3 by 2. So basically 10 times 1.5 is 15 and 4 times 1.5 is 6. Yes, they have a equal ratio. और अगर चेक करनी ऐसे नहीं, अगर समझ आ रहा तो सिंपली आप चेक कर लें 10:15 और फिर लिखें 4:6. क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं? आप 10:15 को सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 2/3 और 4:6 को सिंप्लीफाई करें तो यू विल गेट 2/3. Yes, they are equal. So it means the ratios are equal. So the answer is yes, they are parallel. जी ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट इज कि अगर इसी से पैरेलल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, इफ द वेक्टर ए, सिंपल कंप्लीट वेक्टर को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, पहले हम ए से बी कर, अब जैसा ये लिखा हुआ वेक्टर, इसको मैं कहूंगा दिस इज योर वेक्टर ए. सो कंप्लीट एक वेक्टर को सिंपल किसी एक सिंगल लेटर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए. ओके, इफ दिस इज वेक्टर ए which is -3x and the vector b is 6, 4. It is given that a and b vectors are parallel. Find x. A and B are parallel. Find x. एक तो मेंटली हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा मेंटली कि 6 से मेंटली अगर देखें कोई करना चाहता है तो वो कैसे होगा कि 6 से -3 क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय -2. डिवाइड कर रहे हैं आप -2 से, डिवाइड कर रहे हैं 6 से -3 डिवाइड बाय -2. तो 4 को भी ऐसे ही अगर पैरेलल हैं तो 4 डिवाइडेड बाय -2 विल बी -2. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. लेकिन ये क्योंकि इजी था तो इसकी कैलकुलेशन ये तो मेंटली हो गया, अगर कोई मुश्किल हुआ तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. सो इसका एक मेथड ये है कि आप क्योंकि लिखें सिंपली -3/6 is equal to x/4, because we know the ratios are equal. So -3/6 is equal to x/4. So यहां से आप x फाइंड कर लेंगे, -3/6 into 4, x is -2. तो बहुत इजी है, लेकिन मैं इसका एक और मेथड भी आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चन पे वो एप्लीकेबल होगा. आगे क्वेश्चन जब आएंगे तो उस वक्त बात करूंगा उसकी. और I want to use this property, this one, कि whenever two vectors are parallel, one vector is k times another vector. इसको अब यूज करना है. ये मैं एक और मेथड बताने लगूं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, के मेथड, कि बिकॉज यू नो वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल, तो इसमें कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनेगा. मीन ए इज इक्वल टू के टाइम्स बी बनेगा. If I have written a is equal to k times b and you are writing b is equal to k times a, doesn't matter. At the end answer जो x के हैं वो equal ही आएंगे. So because we know कि vectors are parallel, जब vectors parallel होते हैं तो one vector is k times another vector. So now I am using k method, क्योंकि बहुत से questions ऐसे होंगे जो आगे k method से solve होंगे. So ये method आना चाहिए. Otherwise तो देखा जाए तो mentally भी बहुत easy था और उसके बाद ये ratio method भी बहुत easy था. लेकिन ये k मेथड बेसिकली रेशियो मेथड ही बनेगा अल्टीमेटली, कि वो k आप फाइंड कर, जैसे ऊपर आपने वो k फाइंड किया था कि -2 से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो वो यहीं पे k वही आएगा. तो देखते हैं कि k मेथड हाउ टू यूज दैट.
So copy vector A here, minus 3x, is equal to k times copy vector B here, 6, 4. Now इसके बाद it's totally matrices. K को अंदर multiply कर दें, you will get 6k, 4k, and here you get minus 3x. So minus 3x is equal to 6k, 4k. Now these two vectors are equal. These two matrices are equal. तो corresponding elements आपस में equal होंगे. So minus 3 equal होगा 6k के और x equal होगा 4k के. x is equal to 4k से direct हमारे पास x नहीं आएगा because k is unknown. So first we will use minus 3 is equal to 6k, and from there we will get the value of k, which is minus 1 by 2. So once you have k, other is x is equal to 4k. Corresponding elements are equal in equal matrices. So use the value of k now, which is minus 1 by 2. तो x आपके पास फिर भी वही आ गया minus 2. But you should know this k method. When one vector is parallel to other vector, we know the relation a is equal to k times b. Or you can write b is equal, अगर आप लिखते हैं ना b is equal to k times a, तो उसमें आपका k आ जाता है minus 1 over 2, minus 1 over 2. लेकिन x फिर भी सही वही आना था. Doesn't matter. जी clear? Okay, next is अक्सर वेक्टर्स में रेशियो इक्वल होती है लेकिन वो पैरेलल नहीं होते. ऐसे कौन से वेक्टर्स हैं उनको हम पैरेलल ना कहें तो ज्यादा अच्छा है. फॉर एग्जांपल, if I have a vector AB which is 2, 3, and then I have another vector BC which is 4, 6, ratios are equal. Ratios equal है ना, mean AB is equal to K times BC बन रहा है यहाँ पे भी. 2 times 2 is 4, 3 times 2 is 6. Can we say AB and BC are parallel? Can we say AB and BC are parallel? No, we can't. Shamir is saying we cannot. Why, Shamir? सर ए बी बी पर एंड हो रहा है और दूसरा वाला बीसी जो है वो बी से शुरू हो रहा है, तो वो Yes, दोनों एक मतलब जगह दोनों पे में मीट एक कर रहे पॉइंट हैं. कॉमन है. जी, तो वो तो मीट तो कर meet रहे कर रहे हैं, हैं. दोनों में एक पॉइंट कॉमन है. अगर देखें बी भी दोनों में आ रहा है, इनमें तो एक पॉइंट कॉमन है. जब कॉमन पॉइंट है तो पैरेलल कैसे हो सकते हैं फिर? मतलब अगर मैं ए बी ये ड्रॉ करूं कि ये ए बी है, तो बी सी की लेंथ उससे डबल होगी, ऐसे होगी. लेकिन लॉजिकली ये ट्रू नहीं है. क्यों ट्रू नहीं है? कि बी इधर है या इधर है? वेयर इज एक्चुअली बी? सो एक्चुअली अगर इसको मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं तो ये बन यूं रहा है. दिस इज ए बी और बी सी की डायरेक्शन वही बन रही है, डबल भी बन रही है, ये बन रहा है बी सी. पैरेलल मीन डायरेक्शन इक्वल होती है, तो जो डायरेक्शन ए बी की है वही डायरेक्शन बी सी की है. तो यहाँ पे जब उनमें एक पॉइंट कॉमन आ गए तो वी कैन नॉट से दे आर पैरेलल. हमें क्या कहना चाहिए अगर ऐसा केस बन गया? तो इट मींस ए बी एंड सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंकरेंट पॉइंट्स, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स. मैं लिख देता हूं यहाँ पे. ये अपने पास अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं, ए बी एंड सी lie on a straight line, or we can call them collinear points. Collinear points. What are collinear points? All those points which lie on a straight line, they are called collinear points.
सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसी को नोट करते हैं हम। If AB is equal to K times BC, अगर आपको ये पता चल जाए, वैसे तो पता हो, अगर AB is equal to K times CD हो तो आप लिखते हैं AB and CD are parallel। लेकिन अब अगर AB is equal to K times BC, उनमें से एक पॉइंट भी कॉमन आ रहा हो, तो we will say A, B and C lie on a straight line। Means ABC are collinear points। जी, is that clear? तो आज हमने एक तो वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ सम्स किए हैं, देन वी डिड पैरेलल वेक्टर्स एंड देन द points lying on the line। So parallel vectors, if AB is equal to K times CD, we can say AB and CD are parallel। But if AB is equal to K times BC, one of the point is common, so we can't say that डायरेक्शन एक ही होगी उनकी भी, बट हम उनको पैरेलल नहीं कहेंगे क्योंकि उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा, तो कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाउ कैन दे बी पैरेलल? सो सिंपली वी विल राइट they all the points A, B and C lie on a straight line, so they are collinear। so जो भी हमने पॉइंट्स किए हैं, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए वेक्टर्स के, जस्ट 10 मिनट्स के लिए इन सबको रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल इस टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।